सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का। सादगी और भव्यता थी। गणतंत्र के उत्सव अनोखे, इन्हें मनाने की परंपरा का निर्वहन हर बार और बेहतर बनाने की भावना से किया जाता है। आगमन हो रहा है देश की प्रथम नागरिक, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित। The crowd standing up to see a glimpse of the President of India as she arrives. And now that the President has arrived, the President's bodyguard will present the national salute. The tricolour will be unfurled to the playing of the national anthem. And once the President's bodyguard exit the square, that will be the entry cue for the bands to begin their performance. And Vijay Chowk or Victory Square will hold in its wide embrace the synergy between marching and melody, lifting performance to a higher level of perfection. टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यहां से प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात बीटिंग रिट्रीट 2026 आरंभ होगा।
और अब कुछ ही पलों में ही बिगुल के उद्घोष के साथ कदम से कदम मिलाते शेरे हिंद नेताजी के संकल्पों को दोहराते तीनों सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मिलिट्री बैंड्स विजय चौक की ओर अग्रसर होते नजर आएंगे।
Yummy, yummy, yum. Yummy in my tummy. Yummy, yummy, yum. Yummy, 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 yummy. It's easy on an ether. Yummy, yummy, yum.
आपके सेविंग्स की किस्मत बदलेगी सोकुडो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। आज ही ले आइए सोकुडो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो देता है 9 पैसे प्रति किलोमीटर का एवरेज, मतलब सेविंग्स ही सेविंग।
Assalamualaikum, guys. Today I will show you guys how to make banana fritters. When I have leftover bananas, I use them to make banana fritters. Take 3 leftover bananas and blend them in the mixture with 1 cup of all-purpose flour and ½ cup of sugar. Add 1 tablespoon of baking powder. Now in pan heat oil and add the banana blend. After 2 minutes, flip it and cook it until golden brown. Banana fritters are a popular sweet snack or dessert made from battered and fried ripe bananas. They are a common dish in many tropical cuisines, including those in Southeast Asia. Banana fritters are ready to get served. And so, if you like my recipe, then do comment below. Also, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Assalamualaikum.
The sounding of the retreat, signaling the imminent closure of today's ceremony. The national flag being lowered and folded with dignity, due protocol and respect to be taken away for safekeeping, and permission being granted by the President to conclude the ceremony. रिट्रीट धुन और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर ने राष्ट्रपति जी से अनुमति ली और वो अब बैंड वादकों के साथ यहां से प्रस्थान करेंगे। ये सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का खूबसूरत निर्वहन आज इस बीटिंग रिट्रीट समारोह में। Senses replete with the sights and sounds we heard today. The evening settling in. The conclusion of the beating retreat ceremony here in New Delhi marks the official conclusion of our 77th Republic Day celebrations. India, as a democratic republic, once again showcases the power and value of democracy in the Comity of Nations. And your screens light up with the brilliance of colors, the colors of nationhood, the colors of democracy. शानदार सैन्य संगीत के बाद अब प्रकाश का साम्राज्य, गणतंत्र का उत्सव अपने रंगों में और भी चमकीला। बदलते भारत में समृद्ध और सशक्त भारत की तस्वीर का ये खूबसूरत उदाहरण रोशनी और रंगों में। When flight prices dropped, Vikram could finally start ticking off his bucket list. Expedia, made to travel. The sky embracing the dark and the day. The colors of celebration showing the way. A brief over-the-shoulder look into the past. The future will unfold only too fast. So let's celebrate today together, living, lingering and laughing, wanting to make these moments last. रोशनी से तस्वीरें बदल जाती हैं, रोशनी से तकदीरें भी बदल जाती हैं। हमारी ऐतिहासिक इमारतें इस समय रोशनी से नहाई हुई विजय चौक के आसपास, ये इमारतें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और अंधेरा तभी तक है जब तक रोशनी नहीं है। बाईं ओर ये साउथ ब्लॉक, बीच में राष्ट्रपति भवन का गुंबद और दाहिनी ओर नॉर्थ ब्लॉक, रोशनी का ये खूबसूरत मंजर।
President's bodyguard have arrived and now will escort President Draupadi Murmu back to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. 7 नवंबर 2025 Corridor of power, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 the corridor of governance, illuminated with the surroundings. In complete harmony, a gentle breeze still picking up the sights and the sounds that enthralled an audience here today. जन जन के कल्याण के संकल्प इसी विचार पर टिके हैं कि सबके जीवन से अंधकार को मिटाया जाए। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाएगी, तस्वीर और तकदीर बदलती जाएगी। The evening's cloak of inky velvet embellished with the colors of diversity, an adoring audience showering love, patriotism and admiration. कर्तव्य पथ के पूर्वी छोर पर वो इंडिया गेट और इधर विजय चौक के पूरब की ओर साउथ ब्लॉक जगमगाया हुआ, नहाया हुआ रोशनी में, और इधर ये नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीर है। The colors of celebration becoming one with the air. The air, the wind, the breeze taking the message all across that India, though held strong by its ancient roots, has spread its wings to take off, bearing in their span the aspirations of a young population, a vibrant democracy, and inherent creativity. The world is our family. We are interconnected and interdependent. कर्तव्य पथ जगमगाया हुआ, विजय चौक से एक तरफ इंडिया गेट और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन, प्रकाश का साम्राज्य और जन समूह में बहुत उत्साह, उमंग और जोश। ये रंग और ये रोशनी हमारे गणतंत्र की। विजय चौक से अब प्रस्थान कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक पग्घी में। आज के इस सफल और सार्थक बीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद So as the President leaves for Rashtrapati Bhavan, we once again recall the soul-stirring martial tunes, the rhythmic drum beats and the luminous glow of festivity and celebration, all an essential part of our beating retreat ceremony as it has taken shape today. And when those who participated in the ceremony in the form of an enthralled audience go back today, each and every one of them will carry back sounds and images that will stay with them forever. Because the most beautiful part of this ceremony is not what you see or hear, but how you experience it. हमारा गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान के अंतर्गत हमने देश के नागरिकों को कई अधिकार प्रदत्त किए हैं। भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार, और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे गणतंत्र की 76 वर्षों की यात्रा बेहद शानदार है। हम उस वक्त जहां थे उससे कई गुना सशक्त होकर हम उभरे हैं, एक देश के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में और एक गणतंत्र के रूप में। And when we talk of a republic, it's all about the people. It's all about
celebrating diversity, celebrating togetherness, and foregrounding unity. Time in the past and in the past tense seems to have flown by. Time in the future tense tends to approach slowly. It is only in the present that it is alive, energized, and happening. And today we saw that energy actually coming alive. The departure of the dignitaries from the venue continues. The Prime Minister now seeing off the Vice President. माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं विजय चौक से। प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन और प्रस्थान सुनिश्चित होता है। The Prime Minister taking his leave from the dignitaries and the audience over here. And some time ago, when your screens lit up, a magical moment of brilliance lit up the sky here. The air is perfumed with sentiment and national pride, and the timeless melodies we heard, some new, some modern, a bridge to the past and setting a bridge to the future. The music celebrating countless beats of magic and welcoming this beautiful celebration. गणतंत्र की 76 साल की यात्रा बेहद शानदार है। अगर हम बात करें कुछ चीजों की, कुछ बिंदुओं की, तो वाकई हमारी यात्रा बड़ी गौरवपूर्ण है। 1950 में जब औसत आयु 50 से भी कम थी, अब वो 70 और 70 से भी परे है। इसी प्रकार औसत आय जिसमें कई सौ गुना वृद्धि हुई है। हमारी उपलब्धियां अलग अलग क्षेत्रों में हैं। चिकित्सा, शिक्षा और खासतौर पर अगर हम चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो उस समय कई बीमारियां ऐसी थीं जिनसे हमें लड़ना बाकी था। हमने कई बीमारियों का उन्मूलन किया है, कई टीकों का विकास किया है और कोविड के दौरान भारत ने एक बहुत ही अनोखी, अनूठी और दुनिया में जिसका उदाहरण दिया जाता है, ऐसी लड़ाई भी लड़ी। So the Prime Minister actually making a special effort to go into the people to celebrate together with them today. हमने मांगा नहीं, अर्जित किया है अपना सम्मान। लोकतंत्र की जननी, गणतंत्र का गौरव हमारे मस्तक के ताज हैं। हमने संकल्प लिया है बेहतर कल का, जन कल्याण का, विश्व बंधुत्व का। हमारी याद मनमोहक दृश्य आप विजय चौक से देख रहे थे, वहीं से सीधा प्रसारण बीटिंग रिट्रीट समारोह का, और इसी के साथ जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसका औपचारिक समापन हो गया। आज विशेष रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ये बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है वो संपन्न हुआ और उसमें देशभक्ति से जुड़े हुए मनमोहक धुन बजाए गए, जिसका कि अभी आप आनंद ले रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत के सहकार की नई पहचान NCCF, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ई-समयुक्ति पोर्टल किसानों को MSP पर गारंटीकृत और पारदर्शी खरीद का भरोसा देता है। इस डिजिटल मंच से 42 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, जहां बायबैक अग्रीमेंट मॉडल के तहत सीधी खरीद, गुणवत्ता जांच और समय पर डिजिटल भुगतान
His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Congratulations for Once again, yes. Congratulations. Yes, congratulations. Again, yes. Well lucky on everything. Yes, with the other, a great job. Very busy day. See you again in the meetings under the weather. Yes. Today, this morning. Nice to meet you. Yes. Now we have a lot to do. Yes. To deliver on these agreements. You have delivered after a lot of tasks. This is the easy part. Now it's up to you. Delivering it is most I represent the pharmaceutical industry. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष महामहिम श्री एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आज हमारे बीच यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्षों की उपस्थिति और भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी सहभागिता न केवल हमारी मित्रता को दर्शाती है, बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच साझेदारी की गहराई का भी प्रतीक है। भारत और ईयू इतिहास, भूगोल और अनुभव की दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं, किंतु लोकतंत्र, बहुलवाद और रूल ऑफ लॉ में हमारी साझा आस्था हमें जोड़ती है। हमारा समाज बहुसांस्कृतिक और विविधता से समृद्ध है। हम दोनों ही लोकतांत्रिक परंपराओं से शक्ति प्राप्त करते हैं और हम दोनों का ये दृढ़ विश्वास है कि शांति और समृद्धि का सबसे सुनिश्चित मार्ग संघर्ष नहीं, सहयोग है। देवियों और स्वजनों, आज भारत अपने विकास पथ के एक महत्वपूर्ण चरण में है। प्राचीन सभ्यता की जोड़ों और युवा राष्ट्र की ऊर्जा से प्रेरित होकर भारत एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जो महत्वाकांक्षी, समावेशी और भविष्य की ओर उन्मुख है। बीते वर्षों में हमने आर्थिक अवसरों का विस्तार किया है, संस्थानों का सुदृढ़ किया है और टेक्नोलॉजी को जनकल्याण का माध्यम बनाया है। इस यात्रा में ईयू भारत का एक मूल्यवान और भरोसेमंद साझेदार रहा है। हमने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। आज ईयू भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक प्रमुख स्रोत है तथा अनेक उभरते क्षेत्रों में एक विश्वसनीय सहयोगी है। हमारी सुरक्षा और रक्षा सहयोग एक आशाजनक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में हमारे सहयोग ने हमारी विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और युवा प्रतिभाओं को और निकट लाया है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में हमारी सोच और दृष्टिकोण समान है। हम मानते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है और हम ये भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि वे आज की वास्तविकता के अनुरूप ढल सके। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के दौरान संपन्न हुए महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स, जिनमें इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क शामिल है, भारत ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और सशक्त बनाएंगे। आगे की ओर देखते हुए भारत ईयू संबंधों का भविष्य संभावनाओं से परिपूर्ण है। भारत की विकास यात्रा इंक्लूसिविटी और अपॉर्चुनिटीज पर आधारित है। इनोवेशन, सुदृढ़ सप्लाई चेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम यूरोपियन पार्टनर्स के साथ गहन सहयोग का स्वागत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक उभरती टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग एक ऐसी डिजिटल भविष्य को आकार दे सकता है जो मानव केंद्रित और नैतिक है। और एक विषय जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, लोगों के बीच संपर्क, जो भारत ईयू संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, कलाकार और प्रोफेशनल्स निरंतर ऐसे सेतु बना रहे हैं जो भौगोलिक सीमाओं और राजनीति से परे हैं। यूरोप में भारतीय प्रवासी समुदाय आपसी समझ और सहयोग को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवियों और स्वजनों, यूरोप और भारत दोनों ही अपार सांस्कृतिक विविधता से संपन्न है। काल कर्तव्य पथ पर और अमृत उद्यान में आपने भारत के विभिन्न पहलुओं की झलक देखे। हमारी समृद्ध कलात्मक विरासत तथा हमारे लोगों की प्रतिभा और कौशल को आपके साथ साझा करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर रहा। आज भी मुझे आशा है कि आप भारत की परंपराओं के सुर और स्वाद का आनंद ले पाएंगे। देवियों और स्वजनों, विश्व के समक्ष चुनौतियां जटिल है, किंतु अवसर भी उतने ही व्यापक है। भारत ईयू की साझेदारी संतुलन, स्थिरता और आशा की एक शक्ति के रूप में उभरती है।
साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य गढ़ सकते हैं जो सस्टेनेबल, समावेशी और मानवीय हो। आप दोनों की ये ऐतिहासिक यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर यूरोपियन काउंसिल और महामहिम अध्यक्ष तथा यूरोपियन कमीशन की महामहिम अध्यक्ष के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण और भारत के यूरोपियन यूनियन के बीच मित्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। Madam President, Vice President, Prime Minister, distinguished guests. Thank you, Honorable President Murmu, for your excellent hospitality and for welcoming President von der Leyen and I as your guests of honor at the Republic Day Parade, a clear signal of the growing strategic relevance of European Union, India relations in an increasingly volatile world. Our strategic partnership provides major economic and geopolitical weight. I am proud of the outcomes of today's summit. We have delivered tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues, with a free trade agreement and security and defense partnership and the joint strategic agenda to 2030. And our relationship can only deepen as we implement all of these agreements, delivering concrete benefits to our citizens. And I'm very glad to meet today here representatives of the such vibrant business ecosystem in India, looking at Europe as an opportunity to develop and strengthen our economic ties. And as a person of Indian origin, I'm very proud of this moment. And I think I can say that I represent how deep our people-to-people ties and inspire all our citizens in Europe and India. Bridges that we need to strengthen, continues our relationship. Thank you very much. Madam President, Mr. Vice President, Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you so much again for the warm welcome and for hosting our EU-India Summit. It was a genuine honor for Antonio and me to attend the Republic Day celebrations, and I was deeply moved by this ceremony. It made me reflect on the ancient ties that bind our two continents, our two civilizations. The relationship between Europe and India goes back thousands of years. We have long been connected and inspired through trade, science, and culture. From the earliest discoveries by Indian astronomers to the mathematicians who helped shape the European Enlightenment, or modern voices like Rabindranath Tagore, the first Indian to win the Nobel Prize. His poetry speaks to us still today every time India's national anthem is sung, as we've just heard. This history is the foundation for the transformative partnership we are building today in the fields of economy, technology, and far beyond. And the political ties between Europe and India have never been stronger. The European Union and India are natural strategic partners because we have so much in common. We are the two biggest democracies. We are rooted in the rule of law. Pluralism and respect for human dignity is at our core. We are both
unions made up of many regions, bringing together people of different languages, backgrounds, and cultures, but we respect this diversity. Unity in diversity is the motto on your side and on our side. Our strengths complement each other. Europe's experience and technology, for example, is matched with India's energy and creativity and ingenuity. And our scale gives us global influence, whether in trade, security, or in international relations. This is why India has risen to the top rank of global politics, which Europe welcomes. So just imagine what we can achieve if we combine the resources of Europe and India. And this is precisely why we are here today. It is a decisive moment in our partnership with our free trade agreement, and indeed open the world's largest trading zone ever, an unprecedented market of almost 2 billion people. It means more than trade. It means more and better jobs, more and closer friendship, more connections, more opportunities for our businesses and, of course, our people, and fewer dependencies. And this is only the beginning. This agreement forms the foundation of the crucial partnership between Europe and India, and we are sending a strong signal to the world. In a time where the world is becoming more and more fractured and fractious, at this time, India and Europe are choosing dialogue, collaboration, and cooperation. So, distinguished guests, today is about more than economics. Europe and India are also stepping up strategically. And this is why today we launched our security and defense partnership to protect Indian interests and European interests, and to bring stability and reassurance in volatile times, so that our people can feel safe and our businesses can trade with confidence and with certainty. Distinguished guests, we have achieved so much already. Now, with these agreements, we can scale even greater heights. Together, we can build a new golden road between our continents and pave the way to an even brighter future for India and for Europe. I look forward to deepening this partnership with you. Jai Hind, and long live Europe. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. I think we can. The next document to be signed is the India-EU Security and Defense Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India.
We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged. The Administrative Arrangement on Cooperation and Disaster Risk Management will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Sibi George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, two documents, namely the MOU between the Reserve Bank of India and the European Securities and Market Authority, and the Administrative Arrangement on Advanced Electronic Seals and Signatures, will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Saurabh Kumar, Ambassador of India in Brussels. Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a Joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa, our President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों, प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट von der Leyen का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी
जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड्स, राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friends, dear Ursula, ministers, dear Skaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine,
For me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is a crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance, one of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and Ursula and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still holds true today, and I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. And this
is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience. And our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Guyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago, the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants.